एक मिनट लाइव हो जाए सर। एक मिनट में लाइव हो जाए सर। हाँ, नहीं वो मैडम का वो चल रहा था, उनको सेटअप करके दिया। वो जो लिंक दिया था हमने यूट्यूब में, देखिए सर लाइव ही देखिए। मैडम आइए, यहाँ आके मैडम से बात करें। साथ ही हाँ, आज हमारे मध्य में आप सभी छात्र छात्राएं प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यशाला में जुड़े श्रोतागण, विशिष्ट अतिथिगण, विषय विशेषज्ञ सभी का इस कार्यशाला में स्वागत है। आज इस कार्यशाला में विषय विशेषज्ञ के रूप में हमारे मध्य डॉक्टर पूजा जैन, एमडी पैथोलॉजी, एलएनसीटी मेडिकल कॉलेज इंदौर। आप किसी औपचारिक परिचय की आपको आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप एक परोपकारी और समाज के एक विशिष्ट व्यक्ति हैं और अपने कर्मों व सेवाओं के लिए चिकित्सा के साथ साथ सामाजिक सेवा क्षेत्र में जाने जाते हैं। आपका मैं इस कार्यशाला में वंदन करता हूँ। Hello. Good afternoon, madam. I want to welcome you in my workshop. So, first of all, I want to introduce you to my students. So, Madam Dr. Pooja Jain, she is MD pathologist in and senior resident in LNCT Hospital, Indore.
She has completed her MBBS from the Arvindo Medical College. She is MD from Indore Medical College, and she has experience in various fields of pathology like histopathology, cytology, clinical pathology. And she has attended many workshops, seminars, and other research related works. She has also taken the study related activities, and she is helpful. I welcome you, ma'am, to give your knowledge to my students that they can do well in their life, as well as they can be able to understand about the pathology and its related work. Welcome, madam. Now I welcome my principal sir to welcome madam. हाँ, मैडम नमस्कार, स्वागत है इस कार्यक्रम में आपका। नमस्ते सर। ठीक है, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। Thank you so much, ma'am, being with me. Now I request you to start your lecture so that my student can get knowledge from you. Okay. Good afternoon, everyone. I am Dr. Pooja Jain from Indore, Allen City Medical College. I do my MD Pathology in 2020. Today I will teach you about the introduction and what is actual pathology. What is pathology? It is about only a blood investigation or a urine test and other than else. Okay. So So what is pathology? The word pathology is derived from the two Greek words. The patho means suffering. Actually, it divided into two half. Pathology, patho means suffering and the logis means study. मतलब किसी भी बीमारी की हमें स्टडी करनी है उसको हम पैथोलॉजी बोलते हैं. It is related to this. Okay, study of any suffering, disorder or disease called pathology. So it is basically structural, biochemical, functional changes where in cells, body is made up of cells. So it is structural changes in cells, tissue and organs. That disease which creates changes in cells, tissue and organ in our body, उस स्टडी को अपन पैथोलॉजी बोलते हैं. And it bridges between the basic science and the clinical practice. Okay. So my first slide is what is the investigation involved in this disease. So it involves the investigations of the causes of disease, causes and associated changes at the level of cells या tissue या organ, or turn into a presenting sign and symptom to the patient. That means जब भी patient हमारे पास आता है तो वो अपने sign और symptoms लेकर आता है. Symptoms बोलते हैं जो भी उसको शिकायतें होती हैं और साइंस बोलते हैं जो हम देख पाते हैं. बीइंग अ डॉक्टर, पेशेंट्स हमेशा रिप्रेजेंट करता है सिम्टम्स के साथ कि ये शिकायत है, सिर दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, पैर दुख रहा है, पेट दुख रहा है. और उसके साइंस कैसे होते हैं, जैसे पेलर है या फिर एनीमिक है, स्वेलिंग है बॉडी में, साइनोसिस है. ये सारे साइंस होते हैं जो डॉक्टर्स देखते हैं. और ये किस लेवल पे बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, सेलुलर लेवल पे और टिश्यूज में या ऑर्गन स्पेसिफिक चेंजेस को जो डिसीज का कारण है, उन सब की इन्वेस्टिगेशंस को हम पैथोलॉजी बोलते हैं. और उस रेंज को कि किस रेंज से स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं सेल्यूलर लेवल पे, वो दो टाइप के होते हैं. कि
किस रेंज पे हो रहा है तो हम उसको मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी बोलते हैं एट सब सेल्यूलर लेवल। एंड जो हम खुली आंखों से देख सकते हैं बाय आवर नेकेड आईज, उसको हम ग्रॉस पैथोलॉजी बोलते हैं। So what is the terminology in pathology? Suppose that is patients क्या lesions किसे बोलते हैं? वो कैरेक्टरिस्टिक जो चेंजेस आए हैं टिश्यू में या सेल में उस बीमारी के होने से। कोई भी बीमारी की वजह से बॉडी में अगर टिश्यू के लेवल पे या सेल के लेवल पे कोई कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस आए हैं उसको हम लीजन्स बोलते हैं। मॉर्फोलॉजी किसे बोलते हैं? एग्जामिनेशन ऑफ डिसीज्ड टिश्यू। हमने कोई भी टिश्यू का अगर एग्जामिनेशन किया और अगर वो डिसीज्ड है उसको हम मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। इटियोलॉजी किसे बोलते हैं? कॉज ऑफ द डिसीज, मतलब वाई, ये डिसीज कैसे हुई, वाई, क्यों हुई है। और पैथोजेनेसिस मैकेनिज्म की कैसे हुई है। सो इटियोलॉजी एंड पैथोजेनेसिस में क्या डिफरेंस होता है कि इटियोलॉजी मतलब क्या कारण है इसके होने की, और पैथोजेनेसिस मतलब क्यों हुई है, कैसे हुई है। So here all we discuss about the subdivisions of pathology. So pathology is broadly divided into two categories. One is general pathology and the other is systemic. General, that means you are talking about whole body cells, whole body tissue, whole body fluid, everything which is generalized. Deal with the principle of disease. Examples: inflammation, infection. You can say that inflammation is equivalent to infections or cancer or aging. Okay, aging, that means cellular aging, not our aging. It's denoted about the cellular aging. And what is systemic pathology? The study of disease pertaining to a specific organ or a body system. That means specific organ like liver, lung, heart, spleen. अगर हम किसी स्पेसिफिक ऑर्गन से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो वो सिस्टमिक के अंदर आता है, लेकिन हम जनरलाइज्ड बात कर रहे हैं तो वो जनरल पैथोलॉजी के अंदर आता है, विच इज डिवाइडेड इन सच अ ब्रॉड टू कैटेगरीज. ओके, नाउ I talking about the morphological branches. The one is morphological branches and other is non-morphological branches. So in morphological branches we subdivided in this is histopathology, cytopathology, hematology, and non-morphological branches is clinical pathology, biochemistry, microbiology. This is all included in our pathology. So first we talk about the histopathology. What is histopathology? In pathology, it is a very important subdivision or sub-branch in pathology. So the study includes structural changes observed by naked eye examination, referred as a gross or macroscopic examination, and the changes detected by microscope. सेक्शनिंग करके उसको स्लाइड मेक करके उसका हमने स्टडी किया, उसको हम सर्जिकल पैथोलॉजी के अंदर डालते हैं, मतलब टिश्यू रिमूव्ड फ्रॉम द लिविंग बॉडी. एक्सपेरिमेंटल पैथोलॉजी के अंदर क्या आता है? स्टडी ऑफ टिश्यूज इन एक्सपेरिमेंटल एनिमल, लाइक जैसे हम सबने किया है, फ्रॉग एक्सपेरिमेंट्स किए हैं इन अर्ली. Third is a forensic pathology and autopsy. It includes the study of organ and tissue removed at postmortem for a medico-legal work, for determining the underlying sequence and the cause of death. You all know about the forensic. What is the meaning of forensic? If I'm talking about the forensic pathology and autopsy. If we remove any organ from the dead body, it is only for the medico-legal work, and
Study of these organs called as a forensic pathology and the autopsy, which may find us the underlying sequence and the cause of death. क्या कारण है डेथ का, उस स्टडी को हम करने के लिए फॉरेंसिक पैथोलॉजी से पोस्टमार्टम के थ्रू टिश्यू की या ऑर्गन की स्पेसिफिक जांच करते हैं, which is called as forensic pathology. Now the branch is more. I am talking about the histopathology. Now I am talking about the cytopathology. So what is cytopathology? It includes the study of cell shedding from the lesion. Shedding का मतलब होता है झड़ना. हमारी बॉडी से constant cells की शेडिंग होती है जो हमें दिखती नहीं. उस स्टडी को करना साइटोपैथोलॉजी, उन सेल्स की स्टडीज को, उन शेडेड सेल्स की स्टडीज को किसी भी लीजन से लिया हुआ, उसको साइटोपैथोलॉजी बोलते हैं. साइटोपैथोलॉजी को दो ब्रॉड टर्म में डिवाइड करा है. द वन इज एक्सफोलिएटिंग एंड द अदर इज इंटरवेंशन. ठीक है. सो what is exfoliating? Exfoliating is a branch of cytology in which the cells that a pathologist examine either shed by your body naturally or manually scraped or brushed from the surface of your tissue. Okay? इसका मतलब exfoliating हमारी बॉडी से नेचुरली सेल्स की शेडिंग होना या मैनुअली हम खुद स्क्रैप टिश्यू की सरफेस से सेल्स को ले और उनकी स्टडी करें. एग्जांपल में आते हैं पेप स्मेयर स्टडी इज कॉल्ड एज सर्वाइकल स्मेयर स्टडी. गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब जीआईटी ट्रैक्ट की स्टडी. स्किन लीजन्स की स्टडी. And the mucus sample. Mucus is like example of mucus sample in oral cavity, nasal cavity. This is all covered by mucus samples. And another is intervention cytology. So what is intervention cytology? Most common type in FNAC, fine needle aspiration cytology, called as intervention cytology. A healthcare provider will inject a thin needle into the area that they need to sample and draw out. कोई भी गठान अगर कोई पेशेंट लेकर आ रहा है हमारे पास, किसी भी टाइप की गठान हो उसे, उसकी स्टडी के लिए हमें इंटरवेंशन साइटोलॉजी की जरूरत होती है. उसको हम फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी बोलते हैं. हम एक निडल उस गठान में डालते हैं, उससे सैंपल लेते हैं एंड देन हम स्लाइड बना के उसकी स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में ये जो गठान इसको हुई है ये कितनी ज्यादा हार्मफुल हो सकती है पेशेंट को. एग्जाम्पल्स, कुछ फ्लूइड फिल्ड लम्स होते हैं जिन गठानों में पानी भरा हुआ होता है या पस भरी हुई होती है स्किन के अंदर. कुछ सॉलिड लम्स होते हैं, नोड्यूल्स सॉलिड होते हैं, वो कैंसरस भी हो सकते हैं, नॉन कैंसरस भी हो सकते हैं. लिम्फ नोड, हमारी पूरी बॉडी में लिम्फ नोड होते हैं और लिम्फ नोड का काम क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्डिंग काइंड ऑफ ऑर्गन इन एनी काइंड ऑफ डिसीज. And the pericardial fluid or a pleural fluid or a cytic fluid, these all are fluid, or semen analysis, these all are under in a fluid study. The third one is hematology. Hematology deals with the disease of blood related diseases. It includes the laboratory and the clinical. So under hematology there is a cellular component of blood, hemorrhage,
blood typing, clotting disorder, and the transfusion medicine. Under the cellular component, they are WBCs, having cells, the neutrophil, lymphocytes, monocytes, basophils, and the component of blood. Under the component of blood, there is a plasma, RBC, platelets, hemorrhagic blood typing. Blood typing is a very big component in a blood bank's blood typing. AB positive, negatives, RH, clotting disorders. There are number of clotting disorders, transfusion medicine, all cover in the hematology, deals with the disease of blood. Not only कि एक CBC करा लिया, कंप्लीट ब्लड काउंट करा लिया और देख लिया, बस इतना ही नहीं होता है हेमेटोलॉजी में. हेमेटोलॉजी में ये सारे पॉइंट्स होते हैं, द सेलुलर कंपोनेंट्स, ब्लड, हैमरेज, ब्लड टाइपिंग डिसऑर्डर, क्लॉटिंग डिसऑर्डर, transfusion medicine. Now I'm talking about the non-morphological branches. So I'm talking about previously the morphological branches. Morphological branches having histopathology, having cytopathology, having hematology. And now I'm talking about the non-morphological branches. It includes the clinical pathology, clinical biochemistry. I'm talking about microbiology, immunology, medical genetics, and a molecular pathology. Okay? So what is the clinical pathology? Analysis of a various fluid that comes under any kind of body. That is blood फ्लूइड है, यूरिन फ्लूइड है, सीमन फ्लूइड है, CSF, cerebrospinal fluid, and other fluids that is pericardial fluid, peritoneal fluid, ascitic fluid, pleural fluid. These all are under in the clinical pathology. Routine microscopy हमें जिस भी फ्लूइड की करनी होती है वो सारी clinical pathology के अंदर आती है. And clinical biochemistry, quantitative determination of various biochemical constituent in a serum and plasma and other body fluid. Quantitative that means कि वो जो fluid है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी बॉडी में जो फ्लूइड होता है वो एक नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट होता है. अगर वो नॉर्मल अमाउंट से एक्सीड कर रहा है, दैट मीन्स कि कोई अंडरलाइंग डिसीज है जिसकी वजह से बॉडी के किसी भी पार्ट में और किसी भी ऑर्गन स्पेसिफिक फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है. वो जो कलेक्शन हमारे फ्लूइड का होता है उसकी स्टडी में जो भी सीरम में या प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट में क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन, दैट मीन्स कि कोई भी सेल्स अगर हमें मिल रहे हैं उस फ्लूइड में, उस सीरम में, उससे रिलेटेड प्लाज्मा में, तो वो सारा क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन जो है वो क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री के अंदर आता है. And now I'm talking about the microbiology, deals with the disease of microbes implicated in a human body. What kind of microbes we studied in a microbiology is a bacteria, parasite, fungus, virus. These all kind of microbes which is causing disease in humans under in microbiology. And what is the immunology? A detection of the abnormality in an immune system. So what is immune system? It is our body defense system. We have an immune system. It is also called as a body defense system,
And if any abnormality detect in this immune system, we call this as a immunology pathology. I'm talking to you previously that ki pathology means patho means suffering and not study. Okay, so अगर इम्यून सिस्टम में हमारी बॉडी के कोई भी एबनॉर्मेलिटी आती है तो उसको हम बोलते हैं इम्यूनोलॉजी. ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द मेडिकल जेनेटिक्स. ओके, so what is medical genetics? It deals with the relationship of hereditary between hereditary and the disease. So you know all about that ki when we talk about the hereditary and when we talk about the previous family history, it's all over connected with our generations. Like a शॉर्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूं कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन, बीपी की जो शिकायत है, डायबिटीज जो हो रहा है आजकल हमारी फैमिली में सबको हो रहा है. तो जब हम जाते हैं और फर्स्ट टाइम अपना टेस्ट कराते हैं और हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ा हुआ आता है या फिर हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ आता है, तो डॉक्टर हमसे बहुत ही फॉर्मली ये पूछता है कि घर पे किसी को ये है, शुगर है, घर पे किसी को बीपी की शिकायत है. क्यों लेता है? क्योंकि ये हिस्ट्री इम्पोर्टेंट होती है इसी रिलेशनशिप के लिए जिसको हम हेरिडिटरी एग्जाम्पल्स होते हैं. ब्लड ग्रुप से रिलेटेड डिसीज जेनेटिक्स में आती है. ब्लड ग्रुप से रिलेटेड जेनेटिक्स में आती है जो हर जनरेशन में किसी ना किसी तरीके का इम्पैक्ट डालती है. इनबॉर्न एरर्स ऑफ द मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म के जो इनबॉर्न एरर्स होते हैं ये भी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते हैं. इसीलिए फैमिली हिस्ट्री इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इन मेडिकल जेनेटिक्स. Chromosomal abnormalities in a congenital malformation. What is congenital malformation? एक न्यूबॉर्न जो कि abnormal formed हुआ है, abnormal formed like any kind of organ malformation हो सकता है, फिजिकल malformation हो सकता है. एनी abnormality which is detected by the chromosomal level called as a congenital malformation. And of course the last one is the neoplasm, cancer. If we have a family history of cancer, then it would be a chances of our next generation will suffer from the same type of disease. It is all included in a medical genetics. And now the molecular pathology, detection and diagnostic abnormalities at the level of DNA of cell. Every cell have their own DNA, and if the abnormalities detect at that level, called as a molecular pathology. Now, objectives and the purpose of pathological examination. What is the objective and what is the purpose? I am concluded it by the objective and by the purpose. Purpose मतलब क्यों करना है. तो अभी जितना भी हमने देखा like morphological branches, non-morphological branches which include histopathology, cytopathology, hematology, clinical pathology, biochemistry, microbiology, genetics, these all are the purpose for our examination. So diagnosis of the disease is the main motto.
ये जो डिसीज है इसका डायग्नोसिस हमें बनाना है, इसी के लिए हमें इतनी सारी फील्ड्स को सब डिवाइड करना पड़ता है और इतनी सारी सब डिविजन्स के बाद हम किसी डायग्नोसिस पे पहुंचते हैं कि ये जो डिसीज है ये कहाँ से ओरिजिन हुई है। डायग्नोसिस के बाद चलो हमने पता कर लिया कि ये डिसीज कहाँ से ओरिजिन हुआ, देन उसका ट्रीटमेंट जब तक हम पता नहीं करेंगे तब तक ट्रीटमेंट स्टार्ट करना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल है। So then the treatment part, and what is the prognosis? After giving the treatment, did the patient is still suffering or he is well? This is called as a prognosis. Prognosis, that means a diseased prognosis. कि अगर हमने किसी का डायग्नोसिस किया थ्रू एंड थ्रू प्रोसेस से, उसको ट्रीटमेंट दिया, तो क्या वो ट्रीटमेंट उसको फायदा कर रहा है या नहीं, वो फॉलो अप जो हम लेते हैं किसी भी पेशेंट का उसको हम प्रोग्नोसिस में डालते हैं। एंड ग्रेडिंग इंक्लूड्स द लेवल ऑफ द डिसीज, इट्स grade 1, grade 2, grade 3, and it affects the prognosis. The prognosis of the patient. But of course, I'm talking about the forensic pathology, which is included the medico-legal conditions. Medico-legal conditions to determine the cause of death in post-mortem report, or medico-legal conditions which claim that the organ is normal or healthy, or the organ which is removed from our body is diseased and unhealthy, and the research works and the medical discoveries. These all objective and purpose of the pathological examination are concluded here. So we diagnose, we determine the treatment, medico-legal conditions to determine the cause of death, and the research and the medical discoveries. For the research and for the medical discoveries, we must need a pathology. So this is whole about your pathology. Okay, so this is our first slide. Pathology means suffering and logies means study. What kind of suffering we discuss? At the level of cell, at the level of tissue, at the level of organ. Any structural and biochemical changes called disease. We study these disease and we bridge in a basic science and a clinical practice. So thank you everybody. This is my whole lecture. Your speaker is off, Bhavna Bhargava ma'am. Your speaker is off. If anyone having a doubt, Now the voice is coming, madam. now you are audible. Okay. Thank you so much, ma'am, for giving such a nice presentation to my students. If anyone having any doubt, ask. Do you want to ask any question, students? Any student related to lecture having a doubt. I don't think, madam. They got the topic. I think they will think about it, they will ask later. That's why they are not asking anything right now. Okay. No issue. Thank you so much, madam. Okay, thank you so much. Nice to meet you.
Thank you so much, madam, being with us. Okay. Anytime. Okay.